it will deliver us the type of results that we are looking at. It will quicken our pace of work, and we look forward to seeing this project take off very quickly. Thank you very much, all of you, and God bless you. धन्यवाद सर। इस परियोजना को संपूर्ण तरीके से डिजाइन विकसित किया गया है L&T में, और हमारे देश के मिशन आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करता है। अब माननीय मंत्री जी से अनुमति लेकर अनुरोध करती हूं कि वो स्ट्रैडल कैरियर एंड गर्डर ट्रांसपोर्टर के पहले कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ करें, जो कि गुजरात की तरफ प्रस्थान करेगा। ये शुभ दिन भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता डिजिटली जुड़े हैं जिन्हें प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करवाने का विशेषज्ञ माना जाता है। एक ऐसे नेता जो रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं ला रहे हैं, जो आम लोगों के लिए सुलभ है और मित्रवत भी। यात्रियों के अनुभव को बेहतर और सुखद करने के लिए यात्रियों से ट्रेन पर मिलते हैं, उन्हीं के सुझावों को आधार पर भारतीय रेलवे में नियमित सुधार ला रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमें संबोधित करें और एक नई दिशा दिखाएं। Thank you. To all my friends in Kanchipuram and Tamil Nadu, Vanakkam, Eppadi Irukkinga. To all my friends in Japan, Konnichiwa. It's a real pleasure to be part of this ceremony
and I thank L&T as well as National High Speed Rail Corporation for achieving this great milestone. Mr. Subramaniam, Miyamoto-san, Mr. Agnihotri, Mr. Sharma, my colleagues in the Railway Board, my friends in Larsen & Toubro, and all the ladies and gentlemen present here, it's a great, great milestone that we are achieving today. Kanchipuram is known as a very historical and cultural place. And today, it will also be known for making a giant engineering milestone in the history of Indian Railways. High-speed rail is not just a project. It is a change in mindset of our country, of our railway sector, of our engineering sector, where a new way of working, a new way of operations, a new way of designing things, a new way of planning, and a new way of executing things will be demonstrated in this country. Prime Minister Honorable Narendra Modi ji's vision for railways is huge vision. It's a very unique vision, and it's something which covers entire country's aspirations. Prime Minister Saab always says that railways should be the economic transformation. Railways should bring the economic transformation of the country. It should bring the social cohesion which this country has always been known for. It should be the driver of inclusive growth. It should be the driver of putting our nation first. It should be the driver of having a new mindset in the country, giving a new confidence to our generation. That's the vision. It's not a small thing. It's a huge and a very unique vision which all of us are now implementing for last 7 years. And so many changes have happened in Indian Railways. Today, when you talk to the passengers, people say how clean the stations are. The way the trains are today operated on time, the way newer technologies, newer methods are always welcomed, the way common person's aspirations are being fulfilled is the way Prime Minister Modi ji views Indian Railways. He says that if we have to achieve results in the 21st century, we have to adopt a mindset of 21st century. This project, the straddle carrier and the girder transporter, is a very good example of 21st century mindset. Thinking ahead, thinking of economies, planning a complex project, executing it on the ground, that's the mindset of 21st century. And that's where a genuine sense of relationship between India, between Japan, and within India, between Indian Railways, High Speed Rail Corporation, the partners like Larsen & Toubro who are working together, that entire partnership comes to picture. My special thanks to the technicians, to the welders, to the fitters, to the electricians, the people who have really worked on the nuts and bolts and the wires and cables and the hydraulics and the fitments of this large equipment. I request all of us present to give a very huge round of applause for all the technicians. It is the culmination, it is the combination of the brain and the actual working hands which always results in a very good outcome. Mere brains, mere working hands, probably it will never work out. It has to be a combination of the two. And our government, our party, our Prime Minister always puts inclusive development at the forefront of everything. We believe in Antyodaya, which is the last person in the society should be our focus. Development of the person standing in the last line in the queue
should be the focus of our development projects. High-speed rail, station development, having new lines, improving the speed, having absolutely modern train sets, having Kavach kind of technology which will make Indian Railways safe. Those are all examples of inclusive development. Those are all examples of Antyodaya, because millions of our fellow Indians today travel in Indian Railways. All of us, the Rail Parivar as we call the railway family, all of us in multiple ways are connected with the railways. That is Antyodaya, that is Samarasta, that is caring for the last person in the society, that is inclusive development. I have special word of thanks for Miyamoto-san. Thank you for speaking in Tamil, Hindi and English. I must say arigato gozaimasu to you for bringing so much of your effort in making sure that this project and this entire vision goes forward. I thank Izumi-san. I thank His Excellency, the Ambassador of Japan in India. I thank all the people in Japan who are supporting this project in multiple ways, all the different companies, all the different departments of government, all the different bureaus, the embassies, everybody, because as Miyamoto-san said, Japan and India stand together in a strategic partnership. This project is a classic example, and beyond that, many more things are there, many more initiatives are there, which bring the two great civilizations together in a thread which has been common throughout the history of both these civilizations. So I thank you, arigato gozaimasu, domo arigato to you for all this great help. There will be many more high-speed corridors in the country. This is just a beginning. We look at Prime Minister Modi ji's vision. There will be so many changes in Indian Railways in the coming years, which is the effort of more than 1 crore people, which is 100 million people, correct? 100 million is the right crore. So more than 1 crore people who are all part of the railway family would be working on various initiatives which connect the people, which make sure that the transportation is smooth, safe, and make sure that the lifeline of India, lifeline of Indian economy also becomes the growth, the transformation, and the inclusive development engine of India. Thank you very much. Many congratulations. माननीय मंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आभार जताते हैं। रेलवे भारत की जीवन रेखा है और हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारतीय रेल नित नूतन नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। धन्यवाद एंड जय हिंद एंड थैंक यू सो वेरी मच। I now request Mr. Rajendra Prasad, Director Projects, NHSRCL, to deliver the vote of thanks. माननीय मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड मियामोतो शिंगो-san, मिनिस्टर हेड ऑफ इकोनॉमिक सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाई स्पीड कॉर्पोरेशन, and CEO and MD L&T Mr. Subramaniam, and all the ladies and gentlemen and all officials for the NHRCL, for the L&T and railways present here. मैं माननीय रेल मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने
अपना कीमती समय देकर इस ऐतिहासिक दिन में हमें आपका आशीर्वाद मिला है। सर, एनएचआर सर की टीम और हमारे सभी सहयोगी जो हमारे कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर अपनी जी जान लगाकर आपके नेतृत्व में इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे और जो आज एक एचएसआर ड्रीम है इस कंट्री के लिए, उसको एक रियलिटी बनाएंगे। अंत में मैं फिर से माननीय मंत्री जी का और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल जिन्होंने बनाया है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Prasad. Thank you very much, Minister Ji. And thank you, everybody. Today is really a red letter day in Indian engineering and for India. And we are all infused with this spirit of Atmanirbhar Bharat. And I think to underscore that, shall we rise to sing the national anthem to bring this event to a close? Thank you. We can break for lunch. Rumba Nandri. Rumba Nandri. एक मिनट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यूट्यूब चैनल पे काफ़ी दिनों के बाद एक लाइव इवेंट हुआ, जिसमें कि जैसे कि आप लोगों का बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। हालांकि ये इवेंट ही किसी और पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पहले का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत ही बड़ी उम्मीद होती थी स्टूडेंट्स को कि चलो उसमें जो भी मतलब कि रिपोर्टर्स पार्टिसिपेट करते थे, जो भी आपके मीडिया चैनल्स पार्टिसिपेट करते थे, उनके जो भी रिपोर्टर्स होते थे, हम लोग अपनी बात कम से कम उनके थ्रू रख करके एक कोई एक्सपेक्टेड डेट जानने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बंद कर दिया गया फ्रेंड, अब इससे क्या उम्मीद बच जाती है स्टूडेंट्स को। हम लोगों ने फोन कॉल करके देख लिया आरआरबीज को, मेल करके देख लिया, आरटीआई करके देख लिया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वो भी बंद हो चुका है। अब हमारे पास फिजिकल मतलब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता फ्रेंड। इसलिए हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, सुबह यानी कि आने वाला जो मंडे होगा, आज आपका थर्सडे हो चुका है, कल जैसे कि आप लोगों का फ्राइडे है, तो अब मतलब कि जैसे कि कल तक उम्मीद बहुत कम है कि ग्रुप डी के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई नोटिस आएगा। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कल तक कोई नोटिस नहीं आती है, तो सैटरडे संडे 2 दिन मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए कुछ पोस्टर्स मतलब कि जो हम लोगों ने पिछला बार जो डिजिटल मतलब कि फिजिकल प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पे, तो वहां पे मतलब कि कुछ पोस्टर्स बनाए गए थे, उन सारे पोस्टर्स के मैं सैटरडे संडे को प्रिंट आउट निकाल लूंगा। कल भर मैं वेट करता हूं, मैं भी उम्मीद यही करूंगा कि स्टूडेंट्स को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम डेट आ जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं आता तो सैटरडे संडे मैं सारे पोस्टर्स रेडी कर लूंगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का
मकसद, उद्देश्य और पूरा करिकुलम। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितने भी आपके 21 आरआरबी है, सारे के सारे 21 आरआरबी जिस भी पर्टिकुलर सिटी में आरआरबी लोकेटेड है, उस पर्टिकुलर सिटी के ही लोग, केवल उसी सिटी के लोग पहुंचेंगे, क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाला फ्रेंड। तो हम लोग का प्लान है पूरा 1 वीक का। इसलिए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 वीक तक सुबह 10 बजे अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और शाम को 5 बजे से अपना धरना प्रदर्शन को एंड कर देंगे। शाम को 5 बजे उस सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अपने अपने घर चले जाएंगे और वापस से अगले दिन सुबह के 10 बजे पहुंच जाएंगे। इस बीच में हम लोग कुछ एक एप्लीकेशन भी लिखेंगे, जैसे कि मैं झारखंड स्टेट में हूं तो रांची में जाने वाला हूं, आरआरबी रांची में। पहले हम लोग जाकर के जो भी आरआरबी के चेयरमैन होंगे या जो भी आरआरबी के ऑफिशियल्स होंगे उनसे हम लोग मिलेंगे। तो डेफिनेटली 21 आरआरबी पे जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रेलवे को इस पर कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से रेलवे जो जवाब देकर के काम चलाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, आज आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, इसलिए मैंने भी आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशन नहीं किया था। कल सुबह 10 बजे लाइव डाउट सेशन अपने टाइम से होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा ऑफर चल रहा है फ्रेंड अनअकैडमी की तरफ से। आज ही रात 12 बजे तक वो ऑफर है, 9 तारीख के लास्ट तक। अभी आप लोग मतलब कि जैसे कि आप लोगों का केवल एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, केवल बैंकिंग लेंगे तो भी बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, केवल एसएससी मतलब रेलवे बैंकिंग एसएससी इंडिविजुअल लेंगे तो भी कम में मिलेगा, और तीनों का कॉम्बो लेंगे तो भी कम में मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, उनसे मैं अभी कांटेक्ट में हूं। वो मतलब कि एसएससी प्लस बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे। ऑफर से पहले तो उनको 11,000 कुछ पे करना पड़ रहा था, जबकि अभी मात्र उनको 7,000 कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए सुनहरा ऑफर है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कहीं पर भी कूपन कोड मांगा जाएगा तो हमारा कूपन कोड है उमंग स्टडी, UMANGSTUDY विदाउट स्पेस। इस कूपन कोड को यूज करके आप फ्री प्रोडक्ट को भी अनलॉक कर सकते हैं, साथ ही पेड प्रोडक्ट में भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। इसके बारे में आपका क्या रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा, उस पर्टिकुलर सिटी के जो भी लोग होंगे मंडे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सुबह 8 बजे तक पहुंच जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।